We are starting with question answers. Chapter Friction, question answer A, B, C. Some of you, I think, they have already done the question A, B, C. Uh, you need not write in the copy. Question A, B, C, write in the book itself using pencil, using a good pencil, dark pencil, and written work in the copy. That way I would advise you to write D, question answer in brief, E, long type question answer from now onwards. There is lot of written work, a lot of work is there, so no need to write fill in the blanks, this and that, such question answers. Write in the book itself, check your answer. I'm going to start. Question A is fill in the blanks. Always in our book, question A part is always fill in the blanks. The first question is, I'm going to present screen. Note down some of the answers. Some of the answers I am giving you. Some of the answer you have to write yourself. Which answer we will discuss. Which answers to be done by you, which answers to be given by me. We will tell you, we will keep telling you. Before that, just watch it. I'm going to present a screen, and screen is it is, and if you can see, if it is not visible, zoom your screen, simply zoom it, you can see the answer. The first fill in the blanks is friction. You will answer friction always supports or opposes motion between the two surfaces in contact with each other. I am making the question simple and short. Always supports or always opposes? Opposes. Correct answer. Friction always opposes the motion. Always. And friction also works along the surface of the object. That is why it is also known as tangential force. This particular word I am repeating again and again in every class because there was a question on this. Tangential force, touching the surface, along the surface, tangential force. So the first answer is friction always opposes any relative motion between the two surfaces that are in contact with each other. Second question, static friction is always, more, less, least. What will be the answer? Static friction is always more than sliding friction. Correct answer. More than sliding friction. Static friction is always maximum in comparison to sliding and rolling friction. Static friction, the friction that works between a stationary object and the ground and the surface. So that is why the object does not move. Static friction is always maximum. When the object begins to move, then it is sliding friction, and then rolling friction. Then rolling friction is go round and when the object moves, when the object rolls over a surface, that is rolling friction. Rolling friction is always minimum. Then third question is, sportsman use shoes fitted with spikes, कांटे निकले होते हैं जूते के सोल में, to increase or decrease friction between shoes and the ground. Increase friction. बिल्कुल सही. To increase friction. Correct answer. Increase so that they get a firm grip, strong grip on the ground, and they may not slip on the surface. फील्ड में या कहीं भी. और ये जो फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह होते हैं, कई बार बारिश वगैरह भी होती है तो फुटबॉल मैच नहीं रुकता, बाकी दूसरे मैचेस रुक जाते हैं, फुटबॉल मैच नहीं रुकता बिकॉज दे हैव स्पेशल क्वालिटी, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ फिटेड विथ स्पाइक्स. कई बार गिरते भी हैं लेकिन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. So the third answer is sportsman use shoes fitted with spikes to increase friction between
their shoes and the ground. Number 4, sprinkling of talcum powder on the carom board helps to increase or decrease, helps to increase or decrease, reduce, decrease or reduce, you can write anyone, helps to decrease or reduce friction. दैट इज़ वाई वो जो टैल्कम पाउडर के जो स्ट्राइकर्स वगैरह हैं, दे मूव्स और डाइस, दे मूव्स फास्टर स्मूथली. Number 5 is friction force on an object moving in a fluid depends on its shape. हाँ, ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, एंड डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के पर डिपेंड करता है, कितना गाढ़ा कितना पतला. तो क्वेश्चन केयरफुली देखना, यहाँ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. करेक्ट आंसर. एंड द स्पेशल शेप गिवन टू द एरोप्लेन इज विच टाइप ऑफ फोर्स, सॉरी विच टाइप ऑफ शेप, इट इज स्ट्रीमलाइंड. क्यों स्ट्रीमलाइन बनाते हैं? नैरो इन फ्रंट, नैरो इन बैक, ब्रॉड इन द मिडल. इट इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन कॉज्ड बाई फ्लूइड, कॉज्ड बाई एयर. हमेशा ये इसी तरह का शेप देते हैं, स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन. नाउ वी आर कमिंग टू true false. State true false. Mark in the book itself, do not write in the copy. When a body slides over smooth wet surface, the amount of interlocking of irregularities of the two surfaces in contact increases. When a body, एक मिनट, let me explain. When a body slides over smooth and wet surface, तो इंटरलॉकिंग दोनों सरफेस का, कोई ऐसा सरफेस है जो स्मूथ है और बहुत चिकना है और गीला है, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फास्टर होगा. तो इंटरलॉकिंग जो उस दोनों सरफेस की होगी, ये बढ़ जाएगी या डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? ये आंसर यहाँ ये हाँ डिक्रीज करेगी. स्मूथ सरफेस है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रू फॉल्स नंबर 1 इज फॉल्स. इंटरलॉकिंग decreases, जबकि यहाँ लिखा हुआ है interlocking increases. The second true false, if a car moves eastward, friction acts southwards. This is also false. Friction always works in opposite direction of the movement. हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं. The car is moving towards east direction, the force of friction will act towards west direction. It will act westward. Second also false. The third one, friction depends on how hard the two surfaces press against each other. This is true. Yeah, I'm changing the question. इसी को the same question I am asking in different way. Friction depends. Friction increases when we increase the weight. Friction decreases when we decrease the weight. This is true. एक के ऊपर एक बहुत सारे boxes रख देंगे. We need more force to push it, and in the same way, friction will also be more. Weight जितना बढ़ाते जाएंगे, friction will be more and more. तो ये जो pressing against each other, बहुत सारे डब्बे एक के ऊपर एक, तो ये प्रेस करेगा ना ग्राउंड को, यही the same meaning. Number 3 is true. Number 4, the sole of shoes and the tires of vehicles are traded to decrease friction. This is false. It is traded to increase friction between the ground and our shoes or tires. जो भी question हो, accordingly ये friction increase करने के लिए होता है. Remember, when our slippers or shoes get older, sole is worn out, घिस जाते हैं, तो we tend to slip again and again. स्पेशली बाथरूम और जो वेट सरफेस है, वहाँ हम लोग गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है. सो नंबर 4 इज फॉल्स. नंबर 5, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस, टैल्कम पाउडर, ये सब लुब्रिकेंट्स है.
लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स। ये तो हमने आंसर ही बता दिया पहले। हाँ, नंबर 5 इज ट्रू। नंबर 6, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, नहीं 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 नहीं, पढ़ो ठीक से। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई बॉल बियरिंग्स। वो राउंड राउंड पार्ट होता है ना मशीन का, अंदर वो राउंड शेप देते हैं, रोलिंग के लिए होता है वो फ्रिक्शन। ये दिस इज फॉल्स, नंबर 6 इज फॉल्स। अगर डिक्रीज दिया रहता तो आंसर ठीक ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ नंबर 6 इज फॉल्स। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, दिस इज फॉल्स। फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, ये है इसका आंसर। नंबर 6 इज फॉल्स। एंड नंबर 7, fluid friction can be observed by giving can be decreased by giving suitable shapes to the objects moving through the fluids. This is true. ये सही है, स्ट्रीमलाइन शेप देंगे then friction decreases. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Number 1, there is a figure. Choose the correct answer. Number 1, there is a figure. Number 1, suppose you are writing on a tilted desk. एक तिरछा बोर्ड है जिस पर तुम अपनी बुक रख करके पढ़ाई कर रहे हो। जब बुक स्लाइड करने लगती है नीचे की ओर, in which figure the force of friction will work against the book? कौन सा वाला? Fourth one, correct answer. In book is coming down, book is sliding down. Book is sliding down, friction will work in opposite direction. Book is coming down, friction will work in back direction. बुक की जो स्पीड है उसके पीछे की ओर वो वर्क करेगा, डायरेक्शन जो है मूवमेंट का। तो द आंसर इज फोर्थ वन। Two boys are applying opposite and equal force on the same box. दो लड़के हैं opposite direction से equal force लगा रहे हैं। Which type of friction will be generated between the box and the ground? दोनों लड़के red shirt, green shirt, applying force in opposite direction. Equal and opposite forces are acting on the box exerted by the two boys. Obviously, the box will not move at all. Which type of friction will be this? Between the box and static friction. Correct answer. Static friction. Answer is static friction. The third one. When friction is more, I'm simplifying the question. When friction is more, sorry, 4 students were asked to arrange the frictional forces. मतलब they were given rolling body, static body and sliding body. Two students given 4 objects to observe different types of friction. 4 students were given and they observed rolling friction, static friction and sliding friction. You have to arrange all these 3 types of friction in increasing order. That means least friction, more friction, maximum friction. The order will be increasing order में करना है। सबसे पहले सबसे कम वाला फ्रिक्शन किस में होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन किस में होगा। लीस्ट फ्रिक्शन विल बी ऑफर्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोर, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। दैट मीन्स द सेकेंड वन, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट चॉइस है दैट नंबरिंग इज नॉट देयर, ठीक है ना। आंसर इज रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। दिस इज द आंसर। नंबर 4, क्वेश्चन 4, टिक द करेक्ट आंसर। एनर्जी यूज्ड अप इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। हम लोग जब भी फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव्स एंड फ्रिक्शन एक्सर्टेड एंड दिस एंड दैट,
तो लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग जो कुछ भी लगाते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म? साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हीट एनर्जी, हीट, a large part of our energy is converted into heat energy. Correct answer, correct answer. Next question is number 5. Rahul rolls a ball. Rahul rolls a ball. Rahul rolls a ball on a wooden surface. लकड़ी का कोई सरफेस है, उस पर बॉल को रोल कर रहा है. द बॉल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट. टू मेक द सेम बॉल टू कवर मच लॉन्गर डिस्टेंस, what should Rahul do? क्या करना चाहिए राहुल को? He should spread newspaper on the wooden surface. He should spread a towel. He should sprinkle, छिड़कना. He should sprinkle talcum powder on the wooden surface, or spread a jute bag. वो sacks जो होते हैं, वो जो थैला होता है गेहूं चावल रखने की, बोरी. Spread a jute bag on the wooden surface. What should he do? Sprinkle talcum powder on the wooden surface. हाँ, करेक्ट आंसर. स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस. बिल्कुल करेक्ट आंसर. हाँ, तो दिस इज हाउ ये वी टू if due to sprinkling of talcum powder, friction decreases and the ball will cover more distance, much longer distance. Next question, number 6. A block is sliding on a horizontal surface. The force of friction between them can be increased. कोई एक बॉक्स है, उसको वो स्लाइड कर रहा है, उस पर ताकत लगाई जा रही है, उसको ठेला जा रहा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब बॉक्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो आगे मूव करने में. Force of friction can be increased by decreasing the area of contact, applying a layer of some lubricant, oil or talcum powder on the surface, by polishing the surface, or by putting a second identical box on it. By putting a second identical block. हाँ, always remember, if we increase the weight, Block on top. correct answer. Always remember, when we increase the weight, friction increases. Now we are coming to D type question answers. From this part, D, have you checked your answer? Have you marked the answer in your book? Yes, ma'am. हाँ, वो सब कर लेना. Yes, ma'am. हाँ, good. Yes, ma'am. और Yes, ma'am. sorry. Now we are starting with D type question answer. From here you have to start writing in your copy. Chapter's name, date, then D question answer in brief, as I have written here. D question answer in brief. D question answer in brief, it is some of the question 1 you have to write yourself. Question 1, define the terms static friction and sliding friction. Pick up the answer from you must know और keywords जो भी दिया हो, keywords से दोनों में आंसर मिल जाएंगे. From the lessons also you will get static friction and sliding friction. Answer 1, write yourself. If you have already done this, अगर कर चुके, तो वहाँ पर where you have written such definition static and sliding, write answer D1, वहाँ पर लिख लेना. Second question also the same. Second question you also do yourself. State the meaning of rolling friction and fluid friction. Here also you have to write the definition and write yourself. Answer D1 and D2, write the answer yourself. You can take help of keywords, you must know, or you can write the answer from the content of the lessons. वहाँ से भी you can easily get the question. You will easily get the answer. Answer 3. State the likely cause of friction. As you remember, here the short answers are required.
Here the short answers are required. You have to write not a bigger one, only the short answer. State the likely, that means possible, cause of friction. Friction is caused by the interlocking of irregularities in the surfaces of the two objects which are in contact with each other. And along with this answer, there is a short figure. Can you see there? Object 1 in blue color, ऑब्जेक्ट 2 इन रेड कलर, और वो बीच का जो जिगजैग लाइन है वो उनका इंटरलॉकिंग है, वो इरेगुलरिटीज़ है. नो surfaces are 100% नेचुरली स्मूथ. 100% स्मूथनेस किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं होता, कुछ ना कुछ रफनेस ज़रूर हो सकता है. हाँ, देर इज़ अ डिफरेंस, वी कैनॉट फील देम. Irregularity cannot be felt on some surfaces, but they are there. वहाँ होता ही होता है. तो this is your answer 3. In the same way you will write, ऊपर लिखोगे और नीचे ये short figure you will have to draw. Question 4. Question 4 is, a box is resting on the floor. पहले see the figure in the book. See the figure in the book. A box is resting on the floor. To move it, different type of force is applied. Variable force is applied. अलग अलग तरह का. Variable means अलग अलग तरह का. As shown in the figure, जैसा figure में दिखाया गया है. Figure A, F force is applied. Figure B, double force हो गया यहाँ पर. 2F force is applied. And figure C, 3F force is applied. In figure A, the box is not moving. In figure B, force double करने के बाद भी the box is not moving. लेकिन थर्ड फिगर में the box starts sliding. एकदम just begin कर रहा है, शुरू कर रहा है slide करने के लिए. यहाँ पर which type of force in number 1 A diagram, कौन सा force है ये? फर्स्ट फिगर ए बॉक्स इज नॉट मूविंग. यहाँ विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज देयर? स्टैटिक फ्रिक्शन. बहुत अच्छे. रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग, स्टैटिक. कंफ्यूजन क्यों हुआ? सोचने लगे थे? अच्छा चलो ठीक है. फिगर बी आफ्टर इंक्रीजिंग द फोर्स, इवन नाउ द बॉक्स इज नॉट मूविंग. दिस इज ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ एक बात और बताएंगे, लेकिन दिस इज ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन. और यहाँ इन द थर्ड केस द बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड. दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. 3F इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब एक और हम लोग पढ़ चुके हैं ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बाद से स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है. अगर पूछा जाए कि इन तीनों फिगर में विच वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसके बाद से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कौन से फोर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है मूवमेंट? इट इज़ 2F. सेकेंड वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, सेकेंड वाला फिगर बी स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट आंसर. ये एक्चुअली ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 2F, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज़ 2F. यहाँ नाउ अब बताओ, ये डायरेक्शन, बॉक्स इज मूविंग फॉरवर्ड, इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शन विल वर्क? In which direction friction will work? In the same direction or in opposite direction? Opposite direction. बहुत अच्छे. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो कैसे काम करेगा? ऊपर, नीचे, ईस्ट, साउथ, या along the surface? फ्रिक्शन कहाँ पर काम करेगा? ऊपर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के बगल में, या फिर अलोंग द सरफेस? सरफेस से सटा हुआ ये काम करेगा. फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? अलोंग द सरफेस. हाँ, नाउ यू कैन सी द फोटो.
I have posted. You can see on the, you can see it on the on your screen. थोड़ा zoom करो, अपना वो उंगली को, बड़ा उंगली को टच करके फैलाओ उंगली को, और then you can zoom your picture. You can see and you have to write the answer like this. C के लिए आंसर A, give the likely value of force of limiting friction. It is 2F, limit वाला friction, limit of maximum limit of static friction, that is limiting friction. It is 2F क्योंकि because after 2F movement starts in the box, वहाँ sliding friction आ गया. तो first answer A is 2F. The second answer, in figure A, in figure B, why does the box not move? क्यों नहीं move किया figure A और figure B में? Because amount of force are not sufficient to overcome the static friction. Amount of force F in figure A and force 2F in figure B are not sufficient to overcome the static friction. So the box stays at rest. So the box stays, STAYS कर लेना, ये हम इसको भेजेंगे ये फोटो, तो stays at rest, S लगेगा वहाँ पर. Mark the direction of friction force. You can see, you can see, you can zoom, you can see the photo. हमने ही zoom कर दिया है. Can you see? Figure A, friction, direction of friction and name of friction. It is static. Yes, ma'am. हाँ. In figure B, Yes. it is limiting friction. ठीक है, 2F. And C, it is sliding friction. You have to draw the figure in the same manner as I have drawn, and you have to write like this. This is the correct method of writing the answer. Then answer 5. What is the question 5? Name the kind of frictional friction. Name the kind of friction that comes into play when a book kept on a collection of cylindrical pencil. ढेर सारी पेंसिल बिछा करके उसके ऊपर हमने बुक रख दिया है, and now we are pushing the book. Which type of friction acts here? कौन सा फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है? Rolling friction. Rolling friction. Rolling. Rolling friction comes into play when a book is moved on pencils. पेंसिल को बिछा करके और उसके एक के बाद सटा करके और उसके ऊपर बुक को मूव कराते हैं. इट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन एंड पेंसिल वर्क्स लाइक व्हील्स. पेंसिल्स वर्क लाइक व्हील्स. नंबर 6, ये स्पेशल शेप क्यों दिया जाता है भाई? द ऑब्जेक्ट बोट हो गए, एरोप्लेन हो गया, क्यों वो बुलेट ट्रेन हो गई, कार, ये सबको ये स्पेशल शेप क्यों देते हैं? Why are objects given special shapes when they are moving through fluids? To decrease friction, to increase friction? To decrease friction. To decrease friction. बहुत अच्छे. To decrease friction, and obviously we have to start the question according to, we have to start the answer according to the question. So we will write special shapes are given to the objects when they are moving through fluids to minimize friction, to reduce friction, to decrease friction. फ्रिक्शन को कम से कम करना है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप? व्हाट इज द नेम? Streamlined shape. स्ट्रीमलाइन शेप. बहुत अच्छे. स्ट्रीमलाइन शेप. So this is how we have covered up to a D type question answer. Once again we have time, little time here. We can अच्छा, last time had I given you some work? Yes, ma'am. How much time left? ओ अभी 15 मिनट्स हैं. कितने? 45 तक चलेगा ना बेटा? 10 मिनट्स है. हाँ, ये हो जाएगा. क्वेश्चन E1. क्वेश्चन E1 हाँ शॉर्ट है. क्वेश्चन E1 एक्सप्लेनेशन है. डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and what are the factors on which force of friction depends? What are the factors on which force of friction depends? First you have to define friction.
A force that opposes the relative motion between two surfaces in contact is called friction. Huh? Factors, it depends upon nature of the two surfaces in contact, and it all second one, it depends upon the force pressing the two surfaces together. मतलब second वाले का मतलब हालांकि वैसे नहीं लिखेंगे, the second point का नंबर है depends upon the weight of the object. एक के ऊपर एक जितना ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे फ्रिक्शन विल बी मोर. तो उसको वेट इंक्रीज करके नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे फोर्स प्रेसिंग बिटवीन द टू सरफेसेस टुगेदर. अब दोनों को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन बहुत इजी, हमने अपने मन से दे दिया है, बुक से नहीं उठाया है, बहुत लंबा आंसर हो रहा था. व्हेन वी रोल अ बॉल ओवर अ सीमेंटेड फ्लोर, it covers a large distance and stops. But when we roll the same ball over a sandy floor, बालू वाला कोई फ्लोर है या ग्रासी फ्लोर, घास वाला कोई फ्लोर है, it covers less distance. क्यों? Cemented floor causes less friction, produces less friction, whereas sandy or grassy floor causes more friction. ये इसको explain करना है. You can give some other examples also. If you wish to write something different, you can write. Explanation 1 और explanation 2 में अगर कुछ और examples देना है, तुम लोग अपने मन से कुछ और लिखना चाह रहे हो, मैच बॉक्स वाला है, ये बॉल है, और भी है. when you walk on road, it is okay. जब लेकिन when you walk on soapy floor, wet floor, तो you tend to slip down. तो इस तरह से करके यू हैव टू यू कैन राइट देयर. वो जूते, नए जूते, ट्रेडिंग इज देयर ऑन देयर सोल, तो वी वॉक स्मूथली, बट व्हेन द ट्रेड्स गेट वोर्न आउट, वी स्लिप डाउन. तो इस तरह से करके देख लो, वट एवर विच एवर आंसर इज ईजियर टू यू, राइट दैट एक्सप्लेनेशन. देन एक्सप्लेनेशन 2, when we push a wooden box, we need to apply a certain force. When one more box is kept on the wooden box, ये हम लोग अभी डिस्कस कर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द यहाँ चूज द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, उसमें हम लोग ये चूज कर चुके हैं डिस्कस. तो हियर व्हेन वन मोर बॉक्स इज केप्ट, वी नीड मोर फोर्स टू पुश देम टुगेदर. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन और वेट pressing between two surfaces of boxes in contact. Is there any difficulties in the answer? No, ma'am. Some answer, are you getting answer समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम है किसी को कहीं? गायत्री, दीक्षा, एनी प्रॉब्लम देयर? No, ma'am. हाँ ठीक है, ओके. इफ यू विश यू कैन राइट, यू कैन गिव सम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, नॉट नेसेसरी कि मेरा ही मैम वाला ही आंसर लिखना है. ओके. और ये सेकेंड वन, देर आर थ्री इंक्लाइंड प्लेन, एंड यहाँ एट द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की ओर, इन द फर्स्ट फिगर केस ए, न्यूज़पेपर इज स्प्रेड, न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है. केस बी में फुट इंक्लाइंड प्लेन के नीचे की ओर वो वुलन क्लोथ बिछाया हुआ है, और थर्ड में प्लेन ग्लास शीट बिछाया हुआ है, एंड द सेम बॉल इज रोल्ड. तो बॉल जब नीचे रोल करके नीचे की ओर आएगा, तो इन विच केस द बॉल विल कवर मैक्सिमम डिस्टेंस. Case C. किसमें केस ए, केस बी, केस सी, किसमें बॉल लुढ़कने के बाद, रोल डाउन करने के बाद, इन विच केस इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस. Case C. कौन सा वाला? न्यूज़पेपर, वुलन क्लॉथ, ग्लास शीट, कौन सा? ग्लास शीट. केस सी ना, करेक्ट आंसर केस सी. In case C, हाँ, in case C, the ball will cover maximum distance after rolling down. Why? अब इसका reason देना है. Why? Because glass sheet provides least friction. It is the smoothest surface. तीनों में सबसे smooth surface यही है, and it provides least friction. It causes least friction, इसलिए. तो this is all about today's work. In the next class, give reason. If you write the answer,
ठीक है, गिव रीज़न 4, राइट योर सेल्फ. लेकिन हाँ, वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चन 4 and 5. क्वेश्चन 5 includes 8 क्वेश्चन, नहीं 10 क्वेश्चन. Give reasons. Or number 5 is quite longer. You have to give sufficient examples to explain how friction is useful. उसके बारे में various examples हैं. So this is how. अरे someone is sending request. अब तो almost over class. So it is now we you have to post your work there. Was there some copy work last time? Yes, ma'am. था ना, तो you post your work there. और if there is any problem regarding this ये question answer part, तो we can have a talk. We can have talk in the next period.